of Career Education and Development, Department of Pen Technologies, some activities. And all the participant who has been registered, definitely we will institute will provide the e-certificate as a participation certificate. So in the chat box we received some message about that whether we can get the participation certificate or not. So definitely uh, we will institute will provide. This screen is visible to everyone? Yeah, it is visible, I think. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Alim, should I start? Just Or एक मिनट, just I'm wait for... confirming from the sir. Please, Just please. hello sir. So, good morning, everyone. Once again, welcome all of you, GARWARE Institute of Career Education and Development online webinar on powder coating and process. So, today's speaker is Kuldeep Verma sir from SBTI Kanpur, and he has more than 35-year experience in the powder coating.
and it well known in all North India to North India. It is a pan India outside the India. Today's meeting, we can say it is an international webinar because the participant also joined from the Gulf and Africa and many others areas also. So around we can say more than 150 people has been registered for it. I hope today's session you will get the lots of new input from the sir. So may I, in this word, I'm requesting to Kuldeep sir, please proceed this webinar. So Kuldeep sir, yeah, you can start. Okay. So thank you, friend. Our today's topic is powder coating processing and its application. Uh, Director sir, Kuldeep sir, our Yeah, director sir has been joined. please. Sir, uh, Okay, I'll start. Good morning to Honorable E.R. Kuldeep Verma ji, Thank you, sir. distinguished alumni of PACT, Paint and Coating Association, with wide 35 years of experience in the industry. We heartily welcome you on this online platform on behalf of University of Mumbai GARWARE Institute, and we are sure that your vast knowledge will definitely enlighten the future technocrats of India. At this moment, I would like to extend great thanks to Dr. Ali Manshari and his team for organizing this entire event in the large interest of our students, industry, and other stakeholders. So let's enhance the power of knowledge in the paint and coating industry through the eminent speaker E.R. Kuldeep Verma ji. Over to you, sir. We heartily welcome you once again. Thank you, Dr. Nayak. So this is my privilege to have a webinar with all participants from India as well as Dr. Alim told, from the other part of the different countries. So today's topic is powder coating processing, means manufacturing and the application of powder coating. So I believe the people joined. This screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the people joined, I believe they have some idea of powder coating. First thing, I want to know if anybody can explain what is the difference between coating powder and powder coating. Is there any difference? Please, Saurabh ji. Saurabh ji. Okay. I'm requesting please unmute yourself, everyone. So actually, this coating powder is a raw powder coating before application. And powder coating is cured film
of coating powder. This is the basic difference. Now this is the slideshow. This powder coating, generally paint and powder coating is used on any metal or any substrate that can withstand the temperature of 200 degrees centigrade. So in all the kitchen appliances like food can, linear, bottle cap coating, appliance coating, wooden furniture is for liquid paint, but some electromagnetic shield, any metal or any ceramic or any glass which can withstand temperature 200 degrees centigrade can be powder coated. These are very other things where powder coating can be used. So earlier the solvent based coating were used, now also, but due to some pollution limitations, water based coating came into picture and high solid coating, and now powder coating is there. So in India, powder coating was started in 1986. The first company introduced at Kalyan, that company was Hardcastle and Wood manufacturing company. They introduced powder coating, and they had given me chance from HUTI when I cleared my BTech in 89. I joined Hardcastle, and in 91 they shifted me to Sarigam, very near to Vapi, where they started a new unit. So I have a privilege to start career with Sarigam unit also. That same unit is taken over by Asian Paint in 2000, I think 6 or 7. So with the Hardcastle, another company started powder coating, Jensen Nicholson. Then person, Mr. Deshpande, started his own company, Polycoat Powder at Thane Belapur Road. This is a history of powder coating in India. So after that, Polycoat has taken over by Kansai Nerolac. And in 92, there are so many companies came into powder coating like Rapid Coat, Maharani Coating, and after Hardcastle, I joined Rapid Coat. We developed very good market. Then I joined Paramount Powders India. They have another company in UK also, but I joined India. Then I went to Saudi Arabia in 2000. We started a company in Dammam, Saudi Arab, that is United Coating Industry, UCI Coat. Then I came back in India in 2001, and we started a company, Sharp Coating Private Limited. And 2013, I decided to quit from the job, and I started my own technical consultant company, SAI Consultancy. And since then, we are doing the same. So this ease of application of powder coating is one coat coverage, often reduce production time and related to coat. Because in powder liquid paint, you have to use the primer and finish coat, then top coat, and after every coat, you have to wait for some time. In powder coating, there is no surface. After surface treatment, directly you can coat powder coating. There is no primer is used, but now yes, for the this chemical resistance,
CD or high zinc rich primer is used, but that is also in the powder form. These are basic. Safety is better. Ecology means powder, the oversprayed liquid paint you cannot use, but in powder coating the overspray powder you can use direct after sieve and mixing with the fresh powder. Ease of cleaning is better, quality is also better. So what is powder coating? The powder coating is a dry finish process that uses finely ground powders of pigment and resin to coat the surface. Powder coating uses an electrostatically charged technique in which the powder are charged. So here electrostatic gun is used instead of conventional spray coating. So the powder gets charged of 90 kilowatt, and that substrate is connected with the earth. So negatively charged powder get adhere with the substrate, and after coating it is to be put into the oven so that the film gets cured. These are the benefits of the powder coating: superior scratch resistance, chemical resistance, impact resistance, and flexibility also. Why change to powder coating? These are the benefits of powder coating: the greater durability of powder coating, cost competitive as to the liquid paint because the production rate is fast and no primer is used, so custom color available. These are so many. Because I have some a small time, so I will go a little fast. So before starting the powder coating, I want to show some videos to you. Here, what is powder coating and how it is used. This is first. Is this video is visible to everyone? Yes, sir. Hello? Okay. Yes, sir. Okay. So this is electrostatic gun. Yes, sir. The powder is put in a bucket. The bucket is the other side. So you have to put 5 or 10 kg powder into the bucket, and with the help of compressed air, this is the control panel, you can adjust the powder flow. This is he is coating the almirah, the metal, by electrostatic gun. But this is only physical bonding. If you remove powder, it will be Sir, removed. video is not visible. Please check, please. Sorry, Video is not visible, sir. video We not visible. Yeah. No, somebody told video is okay. No, It sir. is No, sir. visible to everyone, na? No, No, sir. no. no. Okay. Yes, sir. Only Yes, no, sir. sir. It is not visible. It is visible. Okay. Picture is visible. Video is not Okay. visible. Okay. I'll share from other side. Now it is okay. Hmm. Yes, Okay. sir. Yeah, yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now it is okay. Okay. So this is only physical bonding. If you put some compressed air, this powder can be removed, or by the finger also. This is removed. This is earth point. They are connecting earth to the substrate, so powder gets applied on the surface.
This overspray powder you can collect, and after sieving you can mix with the fresh powder, virgin powder, and you can use again. See, now this is, they are going to put in the oven. Yeah, this is a rail. Hello. With the help of rail, they put the whole item into the oven. हेलो सर। Yes. सर एक डाउट था। अभी ये जो सेल्फ्स जो है ये कबर्ड के अंदर ये जो हाँ, एप्लीकेशन हुआ है, जी। जो एक्सेस पाउडर जो सेल्फ के ऊपर बच जा रहा है सर, हाँ, तो उसके यहाँ पर डीएफटी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस डीएफटी को कम, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर हम लोग? आप नोट डाउन कर लिए। लास्ट में 1 आवर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें वी कैन गिव आंसर है। ओके ओके सर, थैंक यू। जी। सो दिस वाज application. Before this, whatever I have shown, the earlier video I have shown, that is thermosetting powder. The powder coating is of two type. One is thermosetting, another is thermoplastic. This is thermoplastic powder, polyethylene resin based. The preheated substrate is put into the fluidized bed and it is put into the oven. This is thermoplastic powder. Sir, video is not carried. It was not visual too. Yes, sir. Yes, sir. Video One is not minute. visible, sir. One Video is minute. not visible, only a picture visible. Now it is okay. Yes, Yeah, Now yes, it sir. is Now okay. it is okay. Okay. Now it is okay, sir. So It preheated is okay, but substrate there is no sound, sir. is put into the powder. Then it is put into the oven for the curing. Why this is thermoplastic powder? Because if you remove the powder chips from the substrate after curing, you can grind and you can remelt it to make it powder. But the first one, the orange color, that is thermosetting, because after curing you cannot use that powder. This is the basic difference of thermoplastic and thermosetting. So I'll show some machines first, then I'll start the lecture. This video is visual.
Yeah, yes, sir. Visible, sir. Okay. Okay. When all the raw material weighed and they are put into the pre-mixer to mix this type of mixing, and it is placed on the hopper of the extruder. This is extruder. This is driving with the motor, and this is gearbox. With the help of gearbox, we rotate the screws in the barrel. That pre-mixed material is coming from upside. This barrel is, there is a provision of heating and cooling. So all the solid resin gets melted, and with the help of screw, melt mixing is there, and you get the uniform paste. This paste is put on the chilled rolls to make it solid sheet. Yeah, this is solid sheet. This is And solid after material. making solid sheet, it has to be grounded. The small chips are coming. Then we will put this into air classifying mill. Sir, please slowly remove. Okay, okay. This is the video. The pre-mixed material is coming up from upside. This plate is chilled. So the material coming from barrel, it is at 140 degrees centigrade. This is high viscosity, sir. Material. With the help of chill roll, we are making it solid. Sir, this machine is twin screw or triple screw? Into these hose pipe, a chilled water is running and heater are placed in the barrel. So heating and cooling is controlled by thermocouple. This is coming as seat parts. Yeah, coming sheets, and then Kevlar is there at the end of this chilling belt. So that crush the chips and make it small chips that will be placed on the grinder. This machine is called air classifying mill, ACM. This is the main mill portion where a grinding disc is rotated at 2000 rpm, and chips are coming from this side. These are chips in the small form from the extruder.
There are two motor. This is feeding motor. This is grinding motor. And after grinding, the powder is sucked from by the blower fan placed after dust collector, so that create the vacuum. So grounded powder will lift from through it, and we can collect. See, this is called classifier cyclone. So when powder strike and rotate into this cyclone, the required particle size after collision, they can be collected in this container, and the very fine powder below 10 micron can go into the dust collector. That is not used here. See, this is dust collector, and blower is this one. This is blower that sucks the air from the grinding zone, and all the powder gets stick over filter bag in the dust collector. A fresh air is going outside through the blower fan. So the machines used will be pre-mixer to make a uniform mixed material. This is also called as HSD, high speed disperser. And second machine is used extruder. The third machine ACM, air classifying mill, then sieve to make separate the required particle size and the coarse powder through sieve. So, sorry, ACM full form, please. Again, sound Air slow. classifying mill. This I'll show the slideshow for the machines. This is the layout of the plant. First weighing. This is visible to everyone. Yes, sir. So this is the weighing platform. Then after that mixing. This mixer may be of two, three different types. This is container mixer. Batch mixing also can be taken place. Then pre-mix material. I'm requesting you all, please mute yourself and unmute whenever is required. So this pre-mix material comes from the top to the extruder, as I show the video. So this molten metal comes on the chill belt. It makes chips. Then chips goes to the grinding like this. These are the mixer of two type. This is batch mixer. You can put 200 kg into this, and after mixing, this is based on the coffee mixer we use in our kitchen, home kitchen. So after mixing, you have to remove the material and you can put another batch. But this is container mixture. I'll show later the video also. Here you can change the container. You can put 3-4 container. This is for the big batches like 1 ton. This is for 200-300 kg. So you can place one container mix
And after mixing, you can place this on the top of the extruder, and you can start mixing another container like that. Another is, this is double cone blender. You can use for a small size of 100 kg or 200 kg. This is extruder I've shown in the video. This is inside the extruder. These are double screw. I'll show other video also. This is double screw extruder. The difference between the powder coating extruder and the plastic extruder is that plastic extruder don't have these flights. They have only screw like this. But here, conveying screw, then flights for melt mixing is also there. This is kibbling machine to make sheet into chips. This is chilling belt. These are the part from the air classifying mill. This is grinding disc. Then this is multi deflector. So with the help of grinding disc, powder chips get stuck between disc and the multi deflector. So by collision, they get in very small particle size. This is rotary to make this disc rotation. This is also inside part of the ACM, the classifier. It restricts the over particle size coarse material to lift up. It again grinds. It again put the coarse powder into the grinding zone. This is classifier like this. This is inside view of the ACM. This is Hello, sir. classifier. Yes. Sir, for grinding process, as it is pronounced as ECM, that is air classifying unit. Someone also says that ICM also is in use for grinding process. Does Yes. it differs by the process type? This is ICM is very recently introduced, but in India, very few companies are using ICM. Mostly air classifying mill is used because this is easy to handle. For the color cleaning, that is easy. These are hard part. This is sieve. You can get different sieve in the market, but basically you have to use the filter cloth. Filter cloth may be of nylon or maybe of wire mesh. The mostly used mesh size is 140 mesh. If you use 120 mesh, you will get slightly coarse powder, and if you get 160 mesh, the mesh gets clogged. So 140 mesh is the maximum used mesh size. This 120, 140 and 160 mesh is basically the number of holes in 1 square centimeter of the area. If there are 120 holes, it is 120 mesh. If it is 140 holes, it is 140 mesh, like that. Excuse me, sir. Yes. What is the size of that pore? No, size is not important. The holes are important because this is 140 mesh. You can convert into micron. If you want the size, you can convert mesh into micron. There is a chart. So
This was a company started in Hardcastle. This is visual to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sure. this actually, I'm compiling a book. So this is history of the powder coating. This was the first person, Mr. K.S. Nair, who sold the first powder in the India. This is Sarigam is near Bhilad. This is Mr. late Mr. Jagmal Singh. He is not no more, but he was you can say the father of powder coating in India. This was inside from the Hardcastle. So thermoplastic powder I have shown. These are actually PVC powder, and these are vinyl powder, polyester, nylon powder, polyethylene. These are thermoplastic. And thermosetting powder. This is the definition. Thermoplastic powder don't cure while they are being stored. Surface tension. Then thermosetting powder are in the store. You have to maintain temperature of 25 degrees centigrade. If temperature is more, they get in the form of lumps. So storage temperature is very important for the thermosetting powder, because it is cross-linking is there. This I have shown already. This is processing. The high-speed disperser, extruder, chilling belt, air classifying mill, then sieve. Hello. Yes. Sir, sorry to interrupt. Can I Ah, get this word file of yours? and now I think it is not possible because recording has been done through GARWARE Institute. But this book is not complete now. When it is complete, maybe by this year, definitely I'll publish this book for the paint industry. So I Okay. want to show you the video actually. This is container mixture. So see the video. This is of origin. This is one type of mixture. Another is drum blender.
This drum blender can be used for pre-mixing also, or some post blending of the metal with the powder, that can be used. Then extruder. Yes, Mr. Devesji, is there any question? Okay. Sir, repeat one more time this machine name. Hello, sir. This coupling is very important. If due to overload your machine gets stuck, because this torque coupling gets uh, unattracted, the pin gets removed, so this is getting free. So gearbox cannot rotate the screw, so you have to fix the again and you can start the machine. So here you can see these these are conveying is part, then melt mixing zone, and then discharge zone. This is not a single piece. I want to show these are
combination of different pieces placed on a shaft. See, Sir, these are which one is better, single or twin? twin screw is better. And what about triple? Triple is better for matte finishes because they get more dispersion. So glossy result are not better on triple screw. And if titanium dioxide is loading is there, more titanium dioxide, then single screw is better. In word, only Bush is making single screw. 99% we can say the double screw is used. Okay, thank you, sir. These are different part. So this is conveying screw. He will place this screw on this shaft. This is very important. When you putting these pieces on this shaft, the face edge should match. Otherwise, they will strike with each other and they may damage the screw. See this portion. Now it is okay. सर इसको वन साइड से पहले लॉक किया ना? Sorry. एक साइड से पहले लॉक किया ना इसको स्क्रू का? हाँ यस, एक साइड से लॉक कर दिया उसको, देन दूसरे साइड से इसको डालते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एलएन स्क्रू था जिससे, क्योंकि वो गियर बॉक्स में जाएगा, फिटिंग जो लॉक किया है वो गियर बॉक्स में जाएगा साइड. ओके सर. These are conveying screw, and you can see the pitch of the screw is getting less, so it will compress the material. Then now these are, you can say, pedals, and these pedals are at different angle with each other. Some are at 60 degree, some are 25 degree, sorry 45 degree, and some are 90. The 45 and 60 degree, it makes the conveying portion, it pushes the premix material to forward, and maximum mixing will be done at 90 degree. Maximum at 90 degree. Sir, what is the size of this screw? It depends. It may be of 35 mm, it may be of 50 mm,
60 mm, depending on your output required. Bigger screw obtain more quantity, or Yes, definitely. This 35 mm will give you 40 kg per hour, and 55 give you 300 kg per hour, and 75 give you maybe 500 kg per hour. okay. Now these are, Sir, please repeat once. yeah, these are at 90 degree with each other. While assembly, these part, there should not be any play between the pieces, because when these pieces rotate, they may get strike with the other screw, and these all will get damaged. Like this. This is, you can rotate. If it is very free, then it is ready to get fixed into the gearbox. So Abhi, somebody was asking the output and size. So here is, I will explain. This all will depend on L by D ratio, length into diameter of the barrel. So this is very important. The double screw extruder are of two type. Co-rotating means both the screw are rotating in a same direction, and counter rotating, both are rotating in opposite direction with each other. But in powder coating, thermosetting, 90% are co-rotating. These are the benefits of counter rotating and co-rotating. This is very important, L by D ratio. The length to the diameter ratio. Generally, it falls between 20 to 1 and 30 to 1 for the thermoplastic. And for thermosetting, it should be 15 ratio 1 or 17 ratio 1. So what is L by D ratio? This. The length, when you see from this front of the barrel, this is barrel. So length of the barrel, the effective length means from the first portion of the screw, like this. The length will count from here, the first part of this screw, not the length of portion going into the gearbox. That is not counted. So from first portion and to the last discharge end portion, this is L, length of the barrel. And if you see from the front in mm, the diameter of the screw, both these screw. See, this is diameter of the screw. This is very important. If you are using your extruder, you can check whatever L by D ratio given by your manufacturer and what is the actual he has supplied to you. Because if
output is more and L by D ratio is 15:1. So you will get some not proper finish in the powder coating. For the bigger output, more output, L by D ratio minimum should be 17.1. Then compression ratio in India, the Indian manufacturer, they don't make compression ratio. They give only one screw. The compression ratio, as I've shown in the Extrutech extruder, the pitch gets different from input to output. The pitch gets different. That is compression ratio. Then grinding, I'll show one video of the inside. This is air classifying mill. The first company introduced in the world. This is Hosokawa Micropole. These are different size of the machine. This is the mechanism how the air gets and sucked through pipe. So this is grinding zone, how the chips grounded. These are different type of classifier. Classifier RPM and particle size. If air volume is fixed, this you can control with the valve at the blower fan, dust collector. Air can be controlled with the valve, and classifier can be controlled with the control panel. If air volume is constant and classifier is constant, you will get no change in particle size. But if classifier is more, you will get finer particles. If it is low, you will get coarse particles. If air is high and classifier is constant, you will get coarse, because more powder gets lifted from the grinding zone. And if air is low, then you will get finer particles. This is very important for the production side. Some companies are having two cyclone over here, 1 and 2. The benefits of this, the required particles can be collected at this and can be sieved place for the dispatch, and some portion comes over here. You can reuse these fine powder into the extruder for the again mixing, and the very fine powder, or you can say 0.5 or 1% of the production, you will get over here. So this will improve your yield in the production. If one cyclone is there, so this powder will be trapped into dust collector, and because dust collector you cannot clean properly, so a different color gets mixed over here. Suppose white hai, तो उसमें black, you will get black particles, blue particles also there. But if this cyclone is there, you will get a single color powder over here. So this will improve your yield. Also,
Sir, is there any need of MPCB certificate or any pollution certificate for that if there is dust? Yes, the powder coating is placed into a red zone of the pollution certificate, because there should not be any powder comes from the discharge end of the blower, but due to not proper maintenance, powder comes with the air also. So that's why earlier this was in orange zone, but now it is on red zone. हाउ मिल हाउ मतलब कितना खर्चा आएगा इसके सर्टिफिकेट के लिए? That is अभी इस टाइम डाटा नहीं है मेरे पास, बट हम आपको हमारा नंबर बता देंगे, तो उसमें आप करिएगा तो इसको बता देंगे आपको, बिकॉज ये तो पॉल्यूशन कंट्रोल से लेना पड़ेगा. आई डोंट नो, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, बिकॉज आप जानते हैं ना, गवर्नमेंट वर्किंग आप जानते ही हैं सारी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So in ACM, the lab model is ACM 5 or 7. The output will be 20 or 40 kg per hour. But then ACM 10 is there. You will get output of 100 kg per hour. This is ACM 15. This will give 300 kg per hour. ACM 10 ACM 10 में 80 से 100 kg per hour के आसपास आएगा. है नाहिद, नाहिद दो ना है बेटी, खाले से बात कर लो. अरे वो उनकी खाला, वो मुंबई वाली खाला, बात कर लो. These were actually the practical, which I cannot visited you to the industry. That's why I put some videos. Now the theoretical portion.
So the powder coating are of different type depending on their resin. These may be pure epoxy, then hybrid. Hybrid is epoxy as well as polyester. This hybrid system gets 3 classification depending on type of polyester resin. One is 50-50, then 70-30, then 60-40. 50-50 means in the formulation 50% epoxy and 50% polyester resin. In 70-30, 70% is polyester and 30 is epoxy. Then 60% polyester, 40% epoxy. And the third is pure polyester. This is based on polyester resin, then its curing agent, the TGIC. And another is polyurethane. This is different type of polyester resin and isocyanate hardener. These epoxy and 50-50, 70-30 for the hybrid system, these polyester are carboxyl terminated. This is the end point, COH termination to react with epoxy. And while this polyurethane is hydroxyl terminated to react with the isocyanate. And this pure polyester is also as carboxyl terminated. So based on the resin, you will get different type of powder coating, and then based on gloss value. Based on gloss value, it may be super glossy, more than 95% gloss level at 60-degree head. And then glossy more than 90, then semi glossy, this is between 70 to 80, then satin finish, this is from 30 to 40, then matte at 10 gloss level, then dead matte at 1 or 2 gloss value. So depending on gloss value, you can bifurcate the finish. This is possible in all grades, in pure epoxy, hybrid, pure polyester and polyurethane. You can get all these, but depending on the formulation. Then sir, this all product come in single pack only? Yes, powder coating is come in single pack. There is no 2-pack. There is no solvent is used in powder coating. Solvent is used just to clean the machine. That's all. Hello, Kuldeep sir. Yes. Yes, it's me Sudesh Kaur Gupta from Netherlands. I see. Thank you. Sir, So, we there have any missed question? one point. Okay, We please. have missed one point. Resin, pure polyester, pyramid based with TGIC and pyramid. Yes, definitely. Yeah. In some European country, they need TGIC free polyester. So this is
polyester. Then pyramid. Pyramid is actually brand name. The chemical is HAA, beta hydroxyl acryl amine. So this is curing agent. Thank you, sir. So with the type of texture, the wrinkle based is structure and emery paper based pattern is texture. Then some crocodile finish is also there. Then there are so many structure finishes are there, staple finish, and then metallic also there. Metallic, in metallic, silver, you will get totally silver finish or sparkle. This is a combination of powder and metallic. So you will get different. Means in the sparkle is like our automotive paints. You are getting the car. They are metallic. They are white but metallic. So that is sparkle. The same is possible in powder coating also. But in India, you know, the traffic is very difficult in India. So these cars and auto parts are not coated with the powder coating, because if there is a scratch mark on this body of the surface, so it is very difficult to recoat. Localize coating is not possible. Yes, definitely some R&D is going. Some companies are making R&D to put powder and cured with infrared IR torches to make it localized, but this is not very easy. So that is the spare part, and some portion like wipers are coated with the powder coating, but this is very popular in home appliances, electrical panel board, computer body, and metal furnitures, and some decorative item of domestic use. The powder coating is very well established. Sir, can you So tell me which hybrid resin is more good resistance, which like 70, 30 or 60 in hybrid, which resin is best? all resin are best here. In what respect you want to ask? For the flow? Like UV, for the flow, and like for the outer side UV resistance. Acha. So in this pure polyester and polyurethane, the super durable normal powder is for normal finish, and super durable, every company makes a different polyester that is super durable. So you have to use super durable polyester with TGIC. So it will give you better UV resistance. TIC free polyester they want. और वहां पर भी सेम आपको HAA के लिए whatever grade of polyester resin is recommended for super durable. एक मिनट देखते हैं, अगर मेरे पास कैटलॉग है तो हम आपको किसी भी कंपनी का आप जब कैटलॉग ओपन करेंगे वहां पे यू विल गेट यस. Is this Hello. visible? Is this visible? Yeah, Yes, yes, sir. sir. Visible, sir. Okay.
ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखते हैं polyester resin for hybrid, these grades, and here this property is there. This is standard durable resin. Okay, this polyester resin with TGIC, standard grade, and then super durable grades are also this. You can see super durable. So here they have given the properties. You can choose based on the property, and for powder coating, the TG means glass transition temperature of the resin is very important. So here this glass transition, it should be minimum 58 for the normal powder. If it is 62, it is better. But sometime for the low bake, definitely TG is low. Like this HAA polyester, this is standard durable, and you will get the super durable. Yeah, super durable for polyurethane also. For HA, with the help of this catalog, you can choose the polyester resin. Okay, sir? Sir, thank you. Okay. And pigment for paint and powder are same or? Definitely for pigments for the powder coating, it should not degrade at 200 degrees centigrade after 10 minutes. The stability should be 200 degrees centigrade for 10 minutes. If it changes the color, it is not suitable for powder coating because the curing temperature is 180 to 200 degrees centigrade 10 minutes. So this is resin, then pigments. Pigment mostly titanium, then carbon black, Zirconium. Carbon black, there are different grades for the basic carbon black like N330 and 220. So don't use 330. 220 is okay because these are rubber grade. These are not pigment paint grade. So you can use 192 of Philips, or there are so many manufacturers. So carbon black, then if you want more jetness in the finish, you can go Monarch grade or Cabot. Then you, if you want very much jetness, so you can go FW200. These are different carbon depending on N22 the is better than N3330. 933 is not good for powder coating, sir, because that is rubber grade. 220 is also rubber grade, but in some limitations this can be used. For black matte and black satin. For Yes, hybrid. for low cost you can use. Okay. But my recommended, use better carbon because usage dose will be less as compared to the lower cheaper carbon. So if you put low carbon, it give you better strength, tinting strength, and oil absorption will be low when you use low carbon dose. So the finish will be better. What will be doses for carbon black? 0.7 to 1% of the total batch. So then for colored inorganic, in inorganic, you know, the middle chrome, lemon chrome, scarlet chrome, ultramarine blue. So there are then red oxide, all depending on required
color. You can red oxide, yellow oxide. There are so many inorganic and organic. If you use middle lemon scarlet, it will middle lemon scarlet, and some of the inorganic color, you have to check whether these are having lead content. येलो हल्का पिगमेंट सर होता है एक. So lead content आप चेक करिए. If you you are making powder coating lead free, so or for lead free you have to use organic. And for as we were discussing, ये जो सुपर ड्यूरेबल पाउडर हैं उनके लिए फिर हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा. पिगमेंट्स इसका देखिए बेसिक हम फॉर्मूला आपको बताएं जो हमारे एक्सपीरियंस से निकला है. डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट, अगर कॉस्ट हमारा लेस देन 500 रुपीज है तो आप ये समझिए these will be inorganic. And if cost is more than 500 to 1000 rupees, it is organic. And if it is more than 1200 rupees per kg, it will be high performance. High performance के लिए you should check the UV resistance and light fastness. You can ask for the test certificate from your supplier for the UV resistance and light fastness. These two are more important for the high performance. Then third ingredient is coming, that is filler or extender. Before going for the extender, the titanium is very important. In titanium, no anatase is used. Anatase, titanium is not used in powder coating. Only rutile. Rutile titanium. This rutile titanium may be of sulfate process depending on the manufacturing metallurgy. Sulfate, or this could be of chloride process. So this sulfate sometimes gets yellowish tint in the outdoor exposure, but chloride didn't get any color change in the UV resistance, in the high temperature resistance. So this chloride process is used only, but for general purpose powder coating you can use sulfate process. The now filler and extender mostly. Excuse me, sir. Yes. What is the demerits of using anatase type TiO2? For the anatase? Yes. Anatase actually, first thing is the low tinting strength and chalking effect with the temperature and with the UV light. So it gets chalked. So that's why it is not used, recommended for the powder coating. The barium sulfate, precipitated.
This is for glossy. And for satin or semi-glossy, barium sulfate natural. Actually, chemical wise, these both are BaSO4. Sir, what is the dosage for titanium? For white, you can go up to 20 to 21% of the formulation. And for other color, depending on the color, you can adjust the gloss. But for white, minimum 18% is required. Then only you will get proper hiding power. Sir, why so much difference from black and white? Black need only 1% and white need 20%. Yes. Because when you put powder coating on the metal substrate, due to hiding issue, and in black, you will get very rare hiding issue. But if you put 1% of the titanium in the formulation, you don't get the opaque film. It will be clear film only. To make it opaque, if it is white, then at least 18% of the titanium is required. But if it is suppose pure red, so in pure red, hardly 4% of the organic pigment and very less or nil amount of titanium is used in pure red. It depending on the color required. In gold, this golden yellow, this color is of middle chrome. You have to put 25% of the middle chrome in the formulation, and there is no titanium required. So it depends. The dose of titanium depends on the color. So barium sulfate natural. In natural, it is SSW, super snow white. And then natural is actually natural barium sulfate is called as barite. So barite, super snow white, and sometime off color. Off color is slightly yellowish, blackish, and red combination of color. So that is called, it is called off color. It is used mainly for black. It is not used for white formulation. For white, you can go for barite, super snow white. Then सर एक क्वेश्चन था, जी, जो दूसरे शेड होते हैं जैसे ब्लू हो गया, जैसे आपने बताया येलो हो गया या जी, पियोर रेड हो गया, तो इसके लिए मिनिमम पिगमेंट डोजेस क्या होने चाहिए? ये एक्चुअली डिपेंड, देखिए, इफ अगर आप इसको ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक की डोज आपको इनऑर्गेनिक, जनरली लोग तो सब इनऑर्गेनिक यूज करते हैं सर। नहीं, अगर ब्लू है तो देखिए, हाँ, आप ब्लू है तो ऑर्गेनिक ही होगा। ब्लू है, ग्रीन है, इसमें ऑर्गेनिक लेना ही पड़ेगा। हाँ, बीटा, अल्फा और ग्रीन बीटा 7 वो अल्फा, सब। यस, प्रूशियन ब्लू, ये सब जाएंगे उसमें। अगर ऑक्सफोर्ड ब्लू बना रहे हैं तो प्रूशियन ब्लू जाएगा ही उसमें, है ना? राइट। तो ये एक्चुअली बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस होता है, बट मोटा मोटा ऐसा हम बताते हैं कि आपको अगर इनऑर्गेनिक आप यूज कर रहे हैं तो पिगमेंट डोज इंक्लूडिंग टाइटेनियम, टोटल पिगमेंट जो है वो डिपेंड करेगा 15% से 20% तक। और इफ इट इज ऑर्गेनिक तो आपका 4 to 10%। ऑर्गेनिक अगर आप डोज बढ़ाएंगे तो इसमें ऑरेंज पील आ जाएगी, बिकॉज अच्छा, the oil absorption of organic pigment are more than as compared to inorganic. ओके, 20% पिगमेंट एंड 50% रेजिन, Then extender भी हो गया उसमें। 30% एक्सटेंडर। Yes. और अगर आप ग्लॉसी ब्लैक सपोज बना रहे हैं एंड हाइब्रिड सिस्टम है तो 55% रेजिन लेना है अपने, 1% कार्बन, बाकी बेरियम सल्फेट एंड सम एडिटिव्स। एडिटिव्स आर ब्लैंक वेरी, फिक्स एडिटिव, ओके।
So calcite, this is calcium carbonate natural. मैक्सिमम यही यूज होते हैं, बेराइट ऑफ कलर, बेराइट SSW, calcite, then barium sulfate for the glossy finishes. Then additive. Additives is flow additive. In flow, it is very important to select the active content. There are 50% active content is also available, and 70% of active content it is also available. So 50% active content means 50% is liquid flow additive, and it is a combination of precipitated silica. Okay, so 50% is precipitated silica, and here only 30% is precipitated. Please mute your microphone. So, here the 50% is flow additive and 50% is silica. So it's better to use 70% active content, because with less dose you will get better smoothness. If you use 50%, so silica is out by default coming 50%. This will reduce the gloss level and the flow property of the finish. Here it is less, or it is better if you get the resin master batch of flow additive. There are resin available in epoxy also, in polyester also. They are liquid flow additive master batch in the resin. You can use in the formulation to get better properties. This will avoid silica. Then benzoin. This will remove the water of reaction. At 80 to 85 degrees centigrade. Normally the boiling temperature of water is 95. So it will remove before the film gets cured, because if this water of reaction comes out after surface cured, start curing, so this will penetrate the film. You will get pinhole or sissiness in the film. It will not very, gloss level is not very good. Then some structural additive. Sir, please mention the doses also. Okay. And approximately cost. No, this is a very very difficult question. The cost, okay, because the cost will depend on your purchasing power. The cost of any raw material of narrow lug will not be same to you, okay, because yes, their yes, right, sir, but at least approximately cost. You can ask in different what is it? Okay. Doses, yes. Based, there are two type of formulator. Some people are putting additive on the base of total formulation, but I will recommend doses on based of the resin content only. So for the flow, this should be 0.15% to 2%. The flow rate, like same benzoin,
रहमतुल्ला जी वीडियो ऑफ कर लीजिए और ऑडियो प्लीज, बार बार आप ऑन हो रहे हैं। ओके ओके, अभी कर रहा हूँ सर। हाँ, और ऑडियो भी ऑफ रखिए हाँ प्लीज, अनलेस एंड अनटिल कोई क्वेश्चन आपको आस्क करना हो। ठीक है। थैंक यू। This benzoin should be calculated on polyester resin. The dose of polyester 1.5% to 2%. Then is structure. There are two types of structure additive. One is pre-blended, any pre-mix. For the pre-mix, and another is post-blending. After making powder, you have to post-blend powder and additive. So it depends on the type of the additive recommended from the manufacturer. Then some charging and answer are there. Charging and answer and anti-static additives are there. Sir, Then dosage is on resin percentage or batch percentage, or no, sorry, for on batch additive, size. for flow and benzoin, these are for the resin. I will always recommend for the resin content, but there are some people, they by experience they get based on the formula total batch size. Okay, and it's better to have a look on the TDS technical data sheet of the manufacturer, what doses they recommend and how they recommending based on resin, PHR, or based on total batch. That will be better practice. And for making matte finishes, hardener is available. This hardener is different for epoxy and hybrid system, and different for pure polyester. These are different because in hybrid or pure epoxy, the same curing agent works as a matting agent also. But for pure polyester and polyurethane, you have to use additional matting agent for the to make film low gloss. Up to this is clear to everyone? Okay. So for hybrid system 50-50, the acid value of the polyester should be 75 plus minus, yani 75 to 78. This should be acid value. And for 70-30, the acid value will be 28 to 30. Same for pure polyester also. It should be 32 to 33, very near. And for polyurethane, it is not hydroxyl acid value, it is hydroxyl value. This should be around 40. And here you can choose based on your isocyanate used, because it is very important to check the hydroxyl value based on your NCO content, isocyanate content. Isocyanate content, normally this is polyester resin and isocyanate. This ratio is normally 80-20.
Okay, this is epoxy and polyester. This ratio is 50-50. And for here, this epoxy and polyester, this ratio should be 30-70. And here, based on your use TGIC, this should be polyester resin, TGIC. The ratio should be 93-7, sometime 92-8 also. But polyester resin, HAA, TGIC free, the ratio should be 95-5. And sometime this ratio goes up to 90-10. You can use different polyester, different HAA, this hardener of this chemistry and this, and you can use both the chemistry in the same formulation to make low gloss powder. This is you can get in during R&D. You can blend two chemistry to make it incompatible. Either any matting agent is not required to get your required gloss level, and or a very less amount will be used to make a low gloss powder. Then I will give some formulation. See this. This is in my Excel format. Suppose this is black glossy of 70-30 hybrid system. This is hybrid. This is only indication, not a exact, because all the costing of the powder will depend on your purchasing cost. So here 52% of the resin is used. The epoxy and polyester are 70-30 ratio. Then carbon black 1%. There is no hardener used because this is glossy finishes. Then barium sulfate, or you can put some amount of barite super snow white in the formulation, because barite gives in a traces form a better smoothness, because it is the crystal size of barium precipitated are in crystalline form, and these are in rhombic form, circular crystals. So it will give better finish than fluoridative and benzoin. So For semi-gloss, sir, barite is better or plant flakes? नहीं, if semi glossy तो barite is better. ये देखिए अभी हम आपको मैट फिनिश दिखा रहे हैं. ये मैट फिनिश, epoxy and polyester
इनका रेशियो चेंज हो गया। देन कार्बन ब्लैक, बाकी फॉर्मूला सेम है। मैटिंग एजेंट आ गया यहाँ पर। तो हम लोग मैटिंग एजेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? हेयर this is 70-30 chemistry. So for the 14 kg of the polyester resin, how much epoxy is required? यह निकाल लीजिए आप, क्योंकि 70 पॉलिस्टर के लिए 30 इपॉक्सी है। सो 14 पॉलिस्टर के लिए 14 into 30 डिवाइड बाय 70, 6 kg इपॉक्सी चाहिए to react with 14 kg of the polyester for 70-30 chemistry. So अब remain epoxy, this is how much? 19 minus 16, 19 minus 6, 13 kg pure unreacted epoxy is there. So you can take the hardener. This hardener is 8% of the free epoxy. सर मैथ में ये जो पॉलिस्टर 70-30 है वो उल्टा हो जाता है क्या? किसमें? मैट में बोलना है? जैसे मैट में अभी पॉलिस्टर 70-30, तो 70 पॉलिस्टर चाहिए, तो आपने 14 ही लिया है और इपॉक्सी 19 लिया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि हमको हार्डनर इसमें ऐड करेंगे ना, मैटिंग एजेंट, तो उसके लिए फ्री, यही यहाँ समझा रहे हैं आपको। देखिए कि आउट ऑफ फॉर 14 kg ऑफ द पॉलिस्टर 6 kg epoxy is required. So remaining epoxy कितना रह गया? 13 kg. तो यहां पर आपको for 13 into 8%, 8 divided 100, ये 1.04 हार्डनर आपको चाहिए टू मेक इट मैट। अभी क्या रहता है कि इसमें सपोज हमने ये कॉस्टिंग जो बनाया है टेंटेटिव, इसमें आपको 10 का ग्लॉस लेवल मिलेगा, यू विल गेट ग्लॉस लेवल ऑफ 10, ठीक है। अगर इफ यू रिक्वायर्ड ग्लॉस लेवल मोर, सपोज 20, देन यू कैन रिवर्स दिस and you can take the trial. If you increase the polyester resin, you have to reduce the epoxy resin to make it same resin content, and you will get here for the 19 kg of the polyester 8 kg of the epoxy resin is required. So -8, remaining epoxy resin is 6 only, so hardener will be 6, 8% of the 6 for the epoxy resin. Up the basic thing is, if you required more epoxy gloss level, so polyester will be more and epoxy will be less, and if you required less gloss level, the epoxy content will be more, polyester resin will be less, and based on free epoxy the matting agent is required over here. ग्लॉसी चाहिए तो पॉलिस्टर बढ़ाना पड़ेगा, और देखिए मैट चाहिए तो इपॉक्सी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप फुल ग्लॉस चाहिए तो आपको 70 पॉलिस्टर चाहिए, 30 इपॉक्सी, और हार्डनर तो 0 हो गया। अब आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है कि यू हैव टू रिड्यूस द ग्लॉस, सो you cannot use hardener or matting agent without free epoxy. You have to create free epoxy to react with the hardener. You got my point? So वो कैसे होगा?
आपको इपॉक्सी कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, पॉलिस्टर कम करना पड़ेगा। ये देखिए डेड मैट, डेड मैट में क्या हो गया, ये डेड मैट ऑफ पीपी है, प्योर पॉलिस्टर। तो यहां पर हमने क्या किया है, आई हैव टेकन टू केमिस्ट्री, वन इज 33(7) of pure polyester and TGIC, and this is different polyester for HAA in the ratio of 95:5. So you will get this PP matting agent, less is required. If you take one chemistry, suppose this is 60 and this is 0, so you will get more gloss and you have to add more matting agent to cut the gloss level. But if you use the incompatible resin in the chemistry, in the formulation, you will get less PP matting agent is required. Is it clear to everyone? Same. This is black, so barite of color is used. If it is white PP matte, so I will use barite super snow white. Then this will give bright white formulation. Flow benzoin, and this wax is required in some time for the anti-scratching, to reduce, to minimize the scratch resistance. This wax is used. Dr. Alim, should I take 5-minute break? Hello, Dr. Saab? Okay, he's not there, I think. So I'll taking 5-minute break and I will rejoin you. Okay, sir.
So back again. There is one presentation, then I will take questions from you. जी सर, मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बोलिए, क्या पूछना चाह रहे थे? हेलो, बोलिए, क्या पूछना था आपको? सर, जी मैं कह रहा हूँ सर, जो प्रीमियम क्वालिटी का पीयू रेजिन बनेगा, जी बिल्कुल जो शीशे की तरह चमक हो, तो उसमें उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, होगा? देखिए, जितना आप रेजिन परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, जी उतना उसमें ग्लॉस बढ़ता जाएगा। ठीक। यानी तो सपोज आपको रेजिन कौन सा, ब्लैक। ये पोलिस्टर हाँ पोलिस्टर जी, रेजिन? जी जी। अच्छा ठीक है। तो ये जो सबसे बेस्ट जो पोलिस्टर रेजिन होता है वो कौन सा होगा? वो तो आपको कैटलॉग से एलनेक्स का आप ले रहे हैं या अर्केमा का ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा किस कंपनी का आप ले रहे हैं। उनके ठीक है। सेल्स पर्सन से आप बात करके, जो जिसमें बेटर फ्लो एंड बेटर ग्लॉस आप प्रॉपर्टी में देख के वहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सर बिल्कुल शीशे की तरह चमक आएगी ना? बिल्कुल शीशे की तरह आएगी। कलर क्या बनाना है मतलब आपको? ये कलर वाइट वाइट बिल्कुल, मतलब क्लियर क्लियर। क्लियर बनाना है ना? हाँ जी, क्लियर। तो क्लियर में तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस्ट, पोलिस्टर रेजिन। अगर आप प्योर पॉलिस्टर बना रहे हैं जी तो आप कोवेस्ट्रो, पहले डीएसएम था, कोवेस्ट्रो का 5201 ले सकते हैं आप। सर, एक मिनट सर, मैं पॉलिस्टर, लिख रहा हूँ, क्या बोले? कोवेस्ट्रो? कोवेस्ट्रो कंपनी है, पहले डीएसएम रेजिन होता था, नीदरलैंड की कंपनी है। ठीक है इनका सर। 5201 फाइव टू 01, जीरो वन ये कोवेस्ट्रो। टीजीआईसी के लिए, ये टीजीआईसी के लिए है। ये टी जी आईसी, आई सी। ये क्या टी जी आई सी क्या है फुल फॉर्म सर? ट्राई ग्लिसरीडाइल आइसोसाइनेयूरेट, ये उसका क्यूरिंग एजेंट है प्योर पॉलिस्टर के लिए। केवरिंग एजेंट है। अभी ठीक आप है। क्या करते हैं? पाउडर तो ये पाउडर पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में है या? नहीं सर, जैसे हम पीयू रेजिन कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप अभी पाउडर कोटिंग तो बना रहे हैं, लिक्विड पेंट बना रहे हैं? नहीं, लिक्विड, ये असल में क्या है कि भी सर, जो बना बनाया जो रेजिन होता है प्योर रेजिन, वही कंपनी से हम खरीद के और अपना क्या कहते हैं, मतलब जो बैंगल्स वगैरह जो बैंगल्स वगैरह जो पेंट होता है उस पे उस हाँ, सेक्टर लिक्विड, में बेचते हैं। लिक्विड में आप करते लिक्विड। हैं। हाँ, वो हाँ तो जी। पीयू, उसमें तो 2 पैक सिस्टम चलता है सर। हाँ हाँ, टू के नाम से आता है, टू के, टू पैक। वो 2 पैक बोलते हैं उसको। जी। और जो टू। पाउडर कोटिंग होता है, ये सिंगल सिंगल पैक होता है। ठीक है। इसलिए आपको दोनों में कंफ्यूज मत करिए, पाउडर का केमिस्ट्री अलग है एंड लिक्विड पेंट का ठीक केमिस्ट्री है। अलग है। जी। तो जरा एक बार सर जरा एक सर जरा बता देते हैं ना डायग्राम सर, कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला इसका, मतलब नहीं, कितना कितना डालना होगा ये? लिक्विड पेंट का आइडिया नहीं है भाई। अच्छा सर, एक और पूछना था आपसे कि एक आता है डीए आता है, डीए क्लोरो क्लोरोसिन ऐसे फिनाइल ऐसे होता है, ठीक है ना? तो उसको जो डाइज होता है, डाइज उसमें डालते थे लिक्विड में, तो अब वो मिलता नहीं है, तो अब उसके उसकी जगह कौन सा मतलब लिक्विड केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, लिक्विड का देखिए, हम आपको क्लियर बताएं, क्योंकि हमारा जो टोटल 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है पाउडर कोटिंग का ही है। पाउडर कोटिंग ठीक में है। आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका हम आपको बता सकते हैं, लिक्विड का आइडिया नहीं है। होगा, मतलब वो गलत आइडिया होगा, वो हम देना नहीं चाह रहे हैं आपको। ये हो जी जी सकता है आपका बिल्कुल। काम हो भी सर जाए। ये कुवेस्ट्रो जो कंपनी आपने बताई, ये कहाँ की कंपनी है सर? ये कहाँ पे है तो ये, आप मतलब इंडिया में? आप लिक्विड जी। पेंट बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये रेजिन नहीं हाँ जी। जाएगा।
वो रेजिन नहीं जाएगा, ये पाउडर कोटिंग के लिए स्पेशल रेजिन है, आप काट दीजिए पाउडर इसको। कटिंग के, ठीक है। आप कोवेस्ट्रो या एलनेक्स इनके कैटलॉग मंगाइए लिक्विड पेंट के रेजिन के लिए, और उसमें देखिए कौन सा ग्रेड लगेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर जब कुलदीप सर, यस सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था अभी मैथ से रिलेटेड। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ यस पार्टिकल सर, साइज डिस्ट्रीब्यूशन? ओके गुड। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ बोले सर। आप क्वेश्चन हाँ सर, बोले। एक हेलो। जी मैं ये क्वेश्चन। पूछना चाह रहा था कि सर, अगर हम पीपी मैट में डेड मैट बनाना चाहें और पिरामिड ए बेस या टीजीआईसी बेस, तो क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो उसका कुछ अगर सजेशन दे सकते हैं क्या अभी? उसका सजेशन यही है कि आप डेड मैट के लिए एक तो पीपी और एच ए की दो केमिस्ट्री ले लीजिए, एक 95 5 नहीं नहीं और सर, दूसरा। सिंगल सिंगल में हमें, नहीं नहीं, नहीं दोनों नहीं, को ब्लेंड नहीं करने का है। आप ब्लेंड मत करिए। सिंगल टीजीआईसी बेस। नहीं नहीं नहीं, एच ए में आप चाहिए टीजीआईसी में चाहिए? ओनली सिंगल टीजीआईसी और एच बोथ, बट डिफरेंट डिफरेंट, नॉट बोथ आर सेम। नहीं नहीं, देखिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो फॉर्मुलेशन है जब आप वेइंग कर रहे हैं ना, तो उस फॉर्मुलेशन यस। में ऐसा डालिए। सपोज 60% आप रेजिन ले रहे हैं, तो आप 60% में से क्या करिए, 30 kg टीजीआईसी और पीपी की 93.7 की केमिस्ट्री लीजिए। ओके। ओके। और उसी में ब्लेंड कर दीजिए 30 kg एच और एच का पॉलिस्टर, आप वेइंग में डालिए दोनों, तो इससे आपकी ग्लॉस कम हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर ग्लॉस कम हो गई, सपोज इसमें आपको मिल गई 60 इंस्टेड ऑफ 50 ग्लॉस, तो आप इसमें पीपी का मैटिंग एजेंट डालिए। 50 ओके। का मैटिंग एजेंट ऐसा होता है कि सपोज आपको 90 की ग्लॉस अगर आ रही है फॉर्मुलेशन में, क्योंकि आपने टोटल रेजिन और टीजीआईसी डालेंगे तो 90 का ग्लॉस आएगा, तो पीपी मैटिंग जो है वो आपको ग्लॉस कितना चाहिए, अगर 40 के आसपास चाहिए, तो आपको टोटल रेजिन का 5% डालना पड़ेगा, पीपी एजेंट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा वो, इससे आपको 40 की ग्लॉस आ जाएगा। अगर आपको सर बिलो हमें 10 डेड में, चाहिए, हाँ बिलो 10 हाँ चाहिए, बिलो। तो आपको पीपी का मैटिंग एजेंट जो है वो 10% डालना पड़ेगा रेजिन का। यानी अगर 60 kg ओके। रेजिन है तो आपको 6 किलो डालना पड़ेगा। ओके। जी, अब पीपी के मैटिंग एजेंट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। आप कहाँ से, इंडिया से बोल रहे हैं, सऊदी से? सर मैं सुदेश कुमार गुप्ता, कंसाई नैरोलैंड। अच्छा, नरेलैक। तो आप लोग तो पीपी मैटिंग एजेंट चाइनीज बहुत सारे आ रहे हैं, आप बट उसमें से। सर वी आर स्ट्रगलिंग इन पीपी मैट, सिंगल we are developing product PP, but single base, not a TGIC and pyramid both. We want to ओके, develop product only single or TGIC or pyramid base. I am आप also मेरा working in R&D. मेरा मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9311। सर है मेरे पास है नंबर। अच्छा, बस तो आप पर्सनली करिएगा, हम आपको पूरा बता देंगे, हाँ, ठीक है? जो रॉ मटेरियल आपके ओके पास होगा ओके उसी से समझा देंगे आपको, लेकिन उसमें फिर जो रॉ मटेरियल ओके आपके पास है वो शेयर करना पड़ेगा भाई। ओके, इट्स ओके। ओके सर, कैरी ऑन। तो जब व्हेन सर वी इसमें पाउडर कोटिंग में शेड मैचिंग कैसे होती है? पाउडर कोटिंग में शेड मैचिंग कैसे होती है? जैसे लिक्विड पेंट में तो ऊपर से दिख के डाल देते, पाउडर पाउडर में कोटिंग कैसा होता है? शेड मैचिंग उसी तरह से होती है, लेकिन जैसे वहां पर क्या करते हैं हम लोग, मिक्सिंग करके पैनल अप्लाई किया, उसको क्योर करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पाउडर बनाना पड़ेगा। पहले 200 ग्राम 300 ग्राम पैनल अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्योरिंग करना पड़ेगा, फिर आप स्टैंडर्ड से मैच करिए और देखिए क्या कमी है उसमें, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। तो अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस रिपीट करना यस, पड़ेगा? बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा आपको। इफ यू आर इनटू पाउडर कोटिंग, एक डेडिकेटेड R&D की छोटी मशीन रखनी पड़ेगी और डेडिकेटेड आदमी रखना पड़ेगा जो कि शेड मैचिंग करेगा।
ऑनलाइन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक टॉपिक है ये। दिस इज एक मार्केट सर्वे है। इंडिया में अराउंड 15,000 मेट्रिक टन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एंड जिसमें पॉलिस्टर यूसेस इंडियन पॉलिस्टर अराउंड 2,000 टन एंड इंपोर्टेड पॉलिस्टर अराउंड 7,000 टन यूज हो रहा है। सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन impacts powder coating properties. It affects application efficiency, film quality, and final performance. The narrow medium size particle size distribution lead to better flow, uniform thickness, and optical properties like durability and chemical resistance. The very fine powder can cause clumping, lumps formation हो जाएगा अगर बहुत fine powder ज़्यादा है, and uneven, गन से प्रॉपर पाउडर नहीं निकलेगा, एंड वेरी कोर्स पार्टिकल्स कैन रिजल्ट इन पुअर फ्लो एंड हैंडलिंग। कोर्स भी बेटर है, बेटर नहीं है, बिकॉज इट विल promote orange peel. So powder coating typically have a particle size distribution range from 10 micron to 100 micron, different percentage, with the majority of particle size falling between 30 to 50 micron. This range ensures good electrostatic charging, flowability, and transfer efficiency. This electrostatic charging means if powder particles are coarse, तो उन पर जो चार्जिंग गन से ट्रांसफर होगा थोड़ा सा स्लो होगा, यानी वो पीस पार्टिकल्स जो है वो पीस पर जाते जाने पहले से ही ओवर स्प्रे में गिर जाएगा। एंड अगर ये बहुत फाइन है तो उसमें करंट तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन चार्जिंग खत्म भी जल्दी होगा, वो भी क्लाउड पूरे बूथ में क्लाउड बना देगा। So that is very fine is also not advisable. So most of the particle size should be between 30 to 50 micron, यानी 90% should pass through this. ये रेंज है, ये देखिए, this is a graphical representation of particle size distribution. This is D10. D10 means 10% of the particles are below this particle size. Suppose ये 9 है, तो 9% of the 10% of the particles are below 9 micron. D50 is 50% of the particles below this particle size, like D90 and D99 or D100 you can say. So this is 99% of particles are below this. This is mixture of fine and coarse. This is narrow distribution, of fine are very less. This is broad distribution, fine, mix, average. So to check the particle size, this is the video. Earlier, this particle size distribution
was checked after making a slurry of powder coating into demineralized butter. But sometimes this didn't get accurate results. So now there is an instrument where powder directly is used. See, here he is checking the particle size by dry powder itself. No liquid is used. In here, this is very important. There should might be two hills. ये दो hills नहीं होने चाहिए. जैसे एक ये है, एक ये और आ रहा है. You have to minimize this hill. If it is minimum, okay. It should not be like this. Two hills should not be like this. Sir, what is the costing for the instrument? This is 35 lakh rupees. 30 lakhs? Yes, this is very expensive. So next I will show another unit. The total setup of the powder coating is almost, I think so, 50 lakh rupees. And only one instrument is 30 lakhs. No, Too this much is not cost. like that. It is not like that. Here, if you take Indian machine of 100 200 kg per hour, definitely it is around 50 to 60 lakh, the full setup. But if you take Chinese machine or machine from UK, they are much costlier. Local machineries are better or not? Which one? Any local supplier. Definitely, there are good machine manufacturer in India. They are exporting to other countries also. It depends on your budget. So the effect of coating properties, the film formation, the effect of particle size on coating properties, the film formation, mechanical and chemical resistance, uniformity, adhesion, all will be better if it is between maximum particle size is between 30 to 50 micron. This is very important sheet. This is, instead of Melbourne instrument, this is sieve analysis. 32 micron,
63 micron, 80 micron, 100 microns. These 4 sieves are used. The percentage of passing should be like this. This is the second instrument is Alpine air jet sieve. This is based on vacuum and separate particles. After placing the test sieve in the air jet, a nozzle is flushed with the mesh on the sieve rotates 360 degree using air to push the particles around. See, this is the video. Hey there, my name's Andy Kogar, and sometimes regulators just don't cut it. Because especially with heavy particle agglomeration, I'll tell you, E200 LX can revolutionize your product. But it all comes down to this, right? Well, they just kind of have been in the first now. Kuldeep sir, hello sir. Hello. Hello sir, can we start the question answer session? Okay, after this, Yes. this is very important. Okay sir. In this instrument, the 32, 63, 80 and 100 4 sieves are used. So one sieve is used at a one time. Means initially you have to put the powder sample on 32 micron. You have to take the result. Then you have to replace 63 micron instead of 32. You have to put powder again. Then you can get the result like that. So the cost of this Alpine Airjet is around 5 to 6 lakh. So we can start the question answer hour. Yes, please. Dr. Alim is there. How we can proceed with the question answer, sir?
वन बाय वन। हेलो। हेलो सर, यस प्लीज। नितिन चौधरी बात कर रहा हूँ। गुड जी आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे ही कोई फाइन टेक्सचर और सेमी ग्लोसी माल बनाते हैं। हेलो। जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, हम। फाइन टेक्सचर और सेमी ग्लोसी माल बनाते हैं तो सर जो हमारा स्टैंडर्ड मास्टर पैनल होता है उसके ऊपर और हमारा सैंपल के पैनल के ऊपर हम फिल्म ट्रांसफर करते हैं तो सेम नहीं आती है, अलग अलग आती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? पेपर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। हाँ, फिल्म ट्रांसफर और पेपर ट्रांसफर सर। जी सो देखिए, पहले तो फिल्म ट्रांसफर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा पॉलीयूरेथेन में। सर पीयू का माल ही यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर हाँ। आप 70-30 बनाएंगे तो उसका कागज चिपक जाता है। हाँ सर, 70-30 में कागज चिपक जाता है और वो ऐसा लिक्विड टाइप का ज्यादा हीट होने के बाद वो बिकॉज उसी में चिपक जाता है, वो चलता ही नहीं है सर। जो 70-30 मतलब केमिस्ट्री है वो जी जी। क्योर होता है, लेकिन सरफेस उसका थोड़ा सा अनक्योर्ड रहता है हमेशा। जी 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 कि जी। नॉर्मल में पता नहीं चलता है, बट पेपर ट्रांसफर में वो चिपक जाता है पेपर। जी। तो तो अभी आपका सर मैं क्वेश्चन, एक आपको। आपका क्वेश्चन क्या था? आपको जी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के और जो आप बनाते हैं उनका फिनिश सेम नहीं आता है। सर, फिनिश सेम आती है, स्टैंडर्ड की सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल, ग्लोस, डीएफटी, सब चीज ओके होने के बाद जब उस पर हम फिल्म ट्रांसफर करते हैं ना, जी तो स्टैंडर्ड तो डार्क रहता ही है और जो हमारा सैंपल हमारा रहता है वो लाइट हो जाता है, लाइट हाँ, फ्लैट। इसका मतलब आप थोड़ी सी ग्लॉस बढ़ाइए। जो आपका बेस पाउडर है, यू हैव टू हम्म। इंक्रीज द ग्लॉस, उसका ग्लॉस थोड़ी बढ़ाइए। जी जी। जितना आप ग्लॉस पे जाएंगे तो उसका पेपर का नीचे से मतलब विजिबिलिटी अच्छी आएगी। जितना आप, जैसे सपोज 1% आप कार्बन ब्लैक डालते हैं ब्लैक ग्लॉसी में भी और ब्लैक मैट में भी, ठीक है। जी जी डोज तो 1% ही रहती है, लेकिन ग्लॉसी जी। में चटनेस बहुत आती है और मैट में देखिए ग्रेनेस आ जाती है। ग्रेननेस आती है, यस सर यस। वो दैट इज ड्यू टू ग्लॉस ओनली। तो अगर आप थोड़ी सी ग्लॉस बढ़ा लेंगे तो आपको वो मैच हो जाएगा। सर करके देखा, मैं अभी शेयरिंग करना दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार आपको एक सैंपल है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करिएगा, हम उसको फिर देखते हैं रिजल्ट। तो नंबर सर आप एक बार बोलिएगा। ओके, हाँ माई नंबर यहीं पे हम लिख देते हैं। जी। 9311640534। और लोग भी नोट कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे टाइम लिमिटेशंस की वजह से, वो हम लोग कर लेंगे वहां पर। क्योंकि सर मैंने इसमें कौन च्वास का जो डीएसएम का यूरिलेक का पॉलिस्टर है, जी उससे भी मैंने ड्राई ब्लेंड करके भी ट्राई किया हुआ है। ओके जो हमारे पास सैंपल है वो इटालियन सैंपल है। ओके। हाँ, तो काफी मशक्कत नहीं करने के बाद भी वो आ नहीं पा रहा है। नहीं, आपके पास क्या बेस पाउडर स्टैंडर्ड मतलब किसी पार्टी का बेस पाउडर है आपके पास? हाँ, पार्टी का बेस पाउडर भी है सर, और जो वहां से इटली से सैंपल हमारे पास आया हुआ है उसके भी सैंपल्स हैं, मास्टर हैं और प्लेट हैं। नहीं सर, एक्चुअली जो इटली से सैंपल आया है आपके पास, वो हम्म। पोर्ट होने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद आया होगा आपके पास। हाँ सर, वो मतलब फुल्ली फाइनल कंप्लीटेड है। तो अब आप बेस पाउडर का जो ग्लॉस लेवल है वो आप उससे मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए आपको थोड़ा ग्लॉस में प्ले करके और ट्रायल करने पड़ेंगे, थोड़ी R&D करनी पड़ेगी सर। ओके, आपसे मैं कौन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको भेजता हूँ। ठीक ठीक है हाँ सर, ओके। सर जो और फिनिश फिनिश पाउडर प्रोडक्ट जो होते हैं जी उसको हम रीयूज कर सकते हैं क्या, वापस एक्सट्रूडर में डाल के कुछ शेड वगैरह चेंज करना है या कुछ ऐसा? लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा पाउडर है जिसमें टाइटेनियम नहीं गया है,
जैसे पियोर रेड है, गोल्डन येलो है, या ऑक्सफोर्ड ब्लू है, इस तरह के कलर को आप थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हैं कार्बन ब्लैक डाल के, लेकिन उसके लिए एक्सक्लूडर थोड़ा सा में डायरेक्टली पाउडर डाल सकते हैं क्या, जो बना हुआ है? नहीं, जो नॉर्मल एक्सट्रूडर है उसमें नहीं डाल सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, मशीन जैम हो जाएगी। मशीन को प्रॉपर रनिंग करने के लिए थोड़ा सा रेजिन पोर्शन भी चाहिए होता है, और थोड़ा सा कोर्स मटेरियल यानी ग्रेन्यूल्स चाहिए होंगे जो उसको मेल्ट मिक्सिंग करेगा। अगर आप ओके। पाउडर डालेंगे तो उसका आउटपुट भी बहुत कम आएगा। तो जो लोग कन्वर्ट करते हैं फाइन पाउडर को किसी कलर में, तो वो थोड़ा सा मशीन का जो एक्सट्रूडर का स्क्रू है उसके डिजाइन में चेंज करना पड़ता है। अभी सर जैसे मार्केट में है ना, मार्केट में बहुत सारे पाउडर कोटिंग वाले हैं, बहुत चीपर कॉस्ट में मटेरियल दे रहे हैं, तो वो क्या करते रहेंगे ऐसा सर? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ये जो स्क्रैप्स के जो पाउडर रहते हैं वही लेके उसको रीब्लेंड करके वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि नहीं, नए नए डिपेंड, के मटेरियल से तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ऐसा होता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से स्क्रैप का मटेरियल लेके यूज करें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सपोज जैसे कंपनीज बड़ी हैं, नेरोलैक है या एशियन पेंट है ना, तो ये तो दे आर ब्रांड है सर, इनको तो नई रेट ब्रांड देते है। ही है लोग। नहीं नहीं, रेट नहीं बात है, हम दूसरी बात आप समझिए। ये लोग क्या करते हैं कि सपोज उनको ब्लैक मैट बनाना है तो डेडिकेटेड मशीन लगा दी ब्लैक मैट के लिए, डेडिकेटेड मशीन लगा दी सीमेंस ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अब उनका एक्सट्रूडर, प्री मिक्सर, पेइंग, डस्ट कलेक्टर सारा ब्लैक मैट पे ही है। तो जो 3 to 4% प्रोडक्शन लॉस डस्ट कलेक्टर में जाता है, उस फाइन पाउडर को दे कैन यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। राइट। आप समझ रहे हैं? तो वो तो एक तरह से उनका वेस्ट हो गया, जिसको वो नेक्स्ट प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग तो कम आएगी। लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि उनके पास एक मशीन या दो मशीन है, तो उनके डस्ट कलेक्टर में क्या जाएगा, व्हाइट भी जाएगा, येलो भी जाएगा, मुंशल ग्रे भी जाएगा, और वहां पर सब कंटामिनेशन हो जाएगा। तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। इसका क्लीनिंग, फास्ट क्लीनिंग प्रोसेस क्या हो सकती है सर, एसीएम की और एक्सट्रूडर की? देखिए, एसीएम तो थोड़ा ज्यादा हार्ड है। फास्ट क्लीनिंग ये हो सकती है कि आपको स्पेयर पार्ट रखने पड़ेंगे मिल के अंदर, जो मूवेबल पार्ट हैं, जैसे डिस्क है, मल्टी डिफ्लेक्टर है, श्रॉड रिंग है, क्लासीफायर है, ये आपको एक और रखना पड़ेगा सेट। तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन खत्म हुआ, ये पार्ट स्क्रू को निकाल के क्लीनिंग में दे दीजिए। केवल आपको बैरल साफ करनी है और मिल में हवा लगा के थोड़ा सा एमिके से साफ कर लेना है। ओके। ओके। एमिकी की जगह जाइलिन यूज किया तो भी चलेगा? साइलिन, देखिए उसका इवोपरेशन ज्यादा होता है, और वो ट्रू सॉल्वेंट नहीं है इपॉक्सी मतलब रेजिन के लिए, इपॉक्सी और पॉलिस्टर के लिए। तो वो क्लीनिंग कम करेगा साइलिन, एमिके ज्यादा बेटर क्लीन करेगा। पर इसमें क्लीनिंग के लिए जो आता है वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं क्या? वैक्यूम से क्लीन कर सकते हैं एशियम को, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक्सट्रूटर तो आपने बताया सही है, वैक्यूम स्क्रू क्लीनर, निकालिए और बैरल साफ कर लीजिए। सर वैक्यूम क्लीनर आपको चाहिए नहीं। जो एसीएम है वो इटसेल्फ वैक्यूम क्लीनर है। आप क्या करिए, केवल मिल का ढक्कन के ऊपर जो उसके लिड है उसके ऊपर जो एक छोटा पोर्शन है मिल में पाइप का, उसको हटा दीजिए, जी जी। ब्लोअर चला दीजिए, वो सक्शन करेगा इधर से, और सारे पीस को निकाल के आप जितने भी उसमें पार्ट हैं उनको हवा मार के, तो वो ब्लोअर फैन अपने आप सारा डस्ट कलेक्टर में खींच ले जाएगा। और फास्ट करना चाहते हैं तो आप वो पार्ट को निकाल के क्लीनिंग में दे दिए, और दूसरे पार्ट आप यहाँ फिट करके अपना प्रोडक्शन करिए। प्लस अगर आपके पास मशीनें कम हैं तो आप कलर का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। जैसे आपने ब्लैक ग्लॉसी पूरा मशीन साफ करके ब्लैक ग्लॉसी बना लिया,
ब्लैक ग्लॉसी के बाद ब्लैक सेटिन बनाइए, ब्लैक सेटिन के बाद ब्लैक मैट बनाइए, फिर ब्लैक टेक्सचर बनाइए, फिर मशीन साफ करके क्लियर बनाइए, क्लियर के बाद आप व्हाइट ग्लॉसी बनाइए, व्हाइट ग्लॉसी के बाद कोई और जो सीमेंस ग्रे ग्लॉसी है या मुंशल ग्रे ग्लॉसी है, इस तरह से धीरे धीरे आप सीक्वेंस में चेंज करिए। अगर आपके नई मशीन लगाई हुई है, नया सेटअप है, तो वहां पर शायद इतने नंबर ऑफ कलर्स नहीं होंगे, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बट जो रनिंग कंपनी है, जैसे नेरोलैक है, शार्प है, रैपिड है, पैरामाउंट है, तो ये लोग का पूरा महीने का शेड्यूल बन जाता है कि वो लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, है ना। तो वो अपना एक शेड मैचिंग का पूरा शेड्यूल बना सकते हैं कि हम इस कलर के बाद ये कलर बनाएंगे विद मिनिमम क्लीनिंग। So I'm asking one question. बोले Um, After finished product, quality checking, which are the parameters are based in this powder coating? वो एक्चुअली हमारा टाइम की वजह से भी छूट गया। तो देखिए, ऑर्डर एक तो फर्स्ट थिंग है कि जो भी रॉ मटेरियल आपका इनपुट आ रहा है, जो परचेज हो रहा है, उनकी भी क्वालिटी चेक करिए। जैसे रेजिन में आप चेक करिए जेल पार्टिकल्स के लिए, उसका एमईके में सोल्यूशन बना लीजिए और उसको फिल्टर पेपर पे डाल के क्लीनिंग करिए, ठीक है। Okay. प्लस इपॉक्सी और पॉलिस्टर 70-30 रेशियो या 50-50 रेशियो लेके उसका जेल टाइम निकालिए। Okay. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, रेजिन हमारा क्योर हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर है। क्योंकि अगर जो जेल टाइम है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये देखिए, Okay. 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आना चाहिए 120 सेकेंड। इसमें Okay. क्योर मतलब जेल हो जाना चाहिए। Okay. 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 अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है, सपोज 130 सेकेंड ले रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, पुअर है। Okay. इसमें फ्लो तो बेटर आएगा, लेकिन इम्पैक्ट में मैकेनिकल में पुअर हो जाएगा ये, ठीक Okay. है। और Okay. अगर जेल टाइम कम है, सपोज 90 या 100 सेकेंड में हो गया, Okay. तो जब आप क्योर करेंगे, इसमें फास्ट क्योरिंग की वजह से ऑरेंज पिल आ जाएगी, इसमें Hmm. फ्लो बेटर। तो एक तो जेल टाइम देखना है आपको रेजिन का, Hmm. प्लस जो पाउडर है, पाउडर के आपको टेस्टिंग करनी है। तो फर्स्ट थिंग है स्पेसिफिक ग्रेविटी। Okay. आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। ये Okay. नॉर्मल जैसे अभी 1.6 के आसपास चलती है नॉर्मल पाउडर के लिए। Okay. पहले हमारे Okay. टाइम पे 1.5 होती थी, बट अभी क्योंकि कॉस्ट भी मार्केट में चाहिए, तो इसलिए 1.6 यानी फिलर लोडिंग या रेजिन कंटेंट कम किया गया है। फिर आप इसको ग्लॉस ग्लॉस वैल्यू देखिए, Hmm. स्मूथनेस, फ्लो, मतलब स्मूथनेस देखिए। फिर जो कोटेड पैनल है उसकी बात कर रहे हैं। Okay. Okay. उसके बाद थिकनेस, थिकनेस देखिए आप इसकी Okay. थिकनेस। कोई भी टेस्टिंग आप करेंगे, Hmm. इसको हमारी 55 टू 60 माइक्रोन पे होनी चाहिए। Okay. Okay. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर Okay. आप समझो 100 माइक्रोन पे कोट कर रहे हैं, तो Hmm. उसमें रिजल्ट आएगा ही नहीं, मैकेनिकल में फेल हो जाएगा। Okay. 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 अगर आपने सपोज 40 माइक्रोन पे कर दिया, आपके एंड पे तो पास हो जाएगा, लेकिन जब वो Okay. कस्टमर पे जाएगा, शायद वहां पे फेल हो। Okay. अ, Any long term test is required this? हाँ, यस यस, दैट डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर। Okay. देखिए, थिकनेस हो गया, फिर इम्पैक्ट। सर इम्पैक्ट कितने पे पास होना चाहिए? ये हम क्या बेटर माइक्रोन है, पे? बिल्कुल बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये हम दिखाना चाह रहे थे, एक्चुअली आपको दिखा नहीं पाए। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, पाउडर कोटिंग के लिए इंडियन स्टैंडर्ड। ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको, हाँ जी। पाउडर कोटिंग स्पेसिफिकेशन? नहीं दिख रही सर। नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही है। अच्छा, तो
अब आई? सर आपका कांटेक्ट नंबर शो नहीं कर रहा है मैसेज में, एक बार और भेज देते ना। ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ ये दिख रही है। हाँ सर दिख ये, रही है। ये नंबर है हमारा। और ये पाउडर कोटिंग स्पेसिफिकेशन, ये फिल्म स्क्रीन दिख रही है। हम्म। ये देखिए IS स्टैंडर्ड है 13871, 2021 में पहले मॉडिफाई किया गया था। पहले और भी पुराना था, इसको मॉडिफाई किया है 21 में। ये देखिए, इन्होंने जो फिल्म है उसको ग्रेड में कन्वर्ट किया है। ग्लॉसी ग्रेड A, ग्रेड B सेमी ग्लॉसी, ग्रेड C मैट फिनिश, देन ग्रेड D स्ट्रक्चर, ग्रेड E टेक्सचर फिनिश। इसके लिए they have stipulated the standards। ये these are standard depending on grade A, grade B, grade C, grade D, grade E। ड्राई फिल्म थिकनेस 50 to 60 माइक्रोन होनी चाहिए। ग्रेड E मतलब स्ट्रक्चर फिनिश के लिए 80 to 100 माइक्रोन होनी चाहिए। ये अगर आपके पास IS 13871 है, सपोज योर कस्टमर इज कंप्लेनिंग he is using structure or texture powder but making 50 to 60 micron and saying it is not giving proper result, so you can show कि भाई इतना माइक्रोन तो आप रखना ही पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। सेम फिनिश स्मूथ, ग्लॉस 60 डिग्री फॉर ग्लॉसी above 80, ग्रेड B सेटिन 80 to 10, ग्रेड C मैट below 10, सेम स्क्रैच फ्लेक्सिबिलिटी क्रॉस एच। ये देखिए टोटल रिजल्ट इसमें दिया हुआ है इन्होंने। इम्पैक्ट फॉर ग्लॉसी 250 मतलब क्या है इम्पैक्ट का? 250 kg सेंटीमीटर। इट मींस टू, इसको 240 से आप इजी कर पाएंगे। 2 kg का वेट 120 सेंटीमीटर से आप ड्रॉप करेंगे। जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, जो इम्पैक्ट टेस्टर है उसका वेट 2 kg होना चाहिए और 120 सेंटीमीटर से आप ड्रॉप करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 240 हो जाएगा। ठीक है। अगर 70 आपका सेटिन फिनिश है तो 150 kg सेंटीमीटर, ये यूनिट दी देखिए kg सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पर 2 kg का वेट टेक्सचर के लिए सर, टेक्सचर के लिए मिनिमम कितना 40 है? 40 मैट के लिए 80 है। तो अगर और आपका टेक्सचर मैट को है, टेक्सचर मैट टेक्सचर मैट के लिए 40 रहेगा बस। 40 ओके। जी और ये मींस सबका मिनिमम मिनिमम जो SST है यस 500 ये मिनिमम सबका, हाइब्रिड का भी, इपॉक्सी का भी और पॉलिस्टर का भी। सॉल्ट स्प्रे रेजिस्टेंस, यस। सॉल्ट स्प्रे वैसे मिनिमम 50 आवर्स तो होना ही चाहिए। 50 की सर 500 है। 500 यस। सो ये हम लोग बात कर रहे थे इम्पैक्ट की। इसमें अगर आपका जो वेट है वो 1 kg है तो 40 के लिए 40 सेंटीमीटर से ड्रॉप करना है, और अगर 2 kg है तो 20 सेंटीमीटर से ड्रॉप करना है। सेम रेजिस्टेंस टू ह्यूमिडिटी, इनके जो सर ये टेस्ट मेथड है। एल्युमिनियम पैनल के लिए 0.8 थिकनेस के लिए कितने से करना पड़ेगा? नहीं, एल्युमिनियम के लिए नहीं है। जितने भी ये टेस्टिंग यहाँ पर दी हुई है, MS पैनल होना चाहिए 3 इंच बाई 6 इंच का, 0.5 mm थिकनेस होनी चाहिए। जी। ये देखिए इन्होंने, टेक्सचर में सर ब्लेंड में थोड़ा इश्यू आता है, ब्लेंड में क्रैक हो जाता है वो तो फिर आपको फॉर्मुलेशन अपने प्रोसेसिंग सेट करनी पड़ेगी। तो ओके। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये मतलब पोर्टल पे अवेलेबल है IS 13871,
और अगर इसमें हम लोग बात करें, थैंक यू सर। एक मिनट, ये जैसे इंडियन स्टैंडर्ड था, इसी तरह और भी हैं। ये देखिए, कुछ कंपनीज जब एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग पाउडर, तो वो क्वाली कोड का स्टैंडर्ड मांगते हैं। इसको क्वाली कोड में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 1 मिनिमम क्वालिटी लेवल ऑफ यूरोपियन रीजन, क्लास 1.5 मिनिमम क्वालिटी लेवल ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये यूरोपियन के लिए जब एक्सपोर्ट करते हैं पाउडर, वहां पर रिक्वायरमेंट है। सर वो विजिबल नहीं है स्क्रीन पे जो अच्छा, आप बोल रहे हैं। ओके ओके, 1 मिनट। एक्चुअली उस शेयरिंग का बार बार करना पड़ता है ना। नाउ इट इज विजिबल। यस सर, ओके, थैंक यू। तो ये देखिए इन्होंने सब दिया हुआ है। और ये सुपर ड्यूरेबल जब पॉलिस्टर लगते हैं, वहां पर क्वाली कोड इंपॉर्टेंट है। सर पाउडर बेटर है कि पेंट बेटर है? पाउडर बेटर है। सर पेन टेक्नोलॉजी से कोई जैसे बीटेक कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब निकलती है कि प्राइवेट ही सेक्टर रहेगा सारा? नहीं, गवर्नमेंट की भी डीआरडीओ में निकलती है या आरडीएसओ लखनऊ में निकलती है। रेलवे वगैरह में नहीं है सर? रेलवे में निकलती है ना। रेल आरडीएस और कोच रेलवे फैक्ट्री, ही है। हाँ, रेल कोच फैक्ट्री में भी निकलती है। बट सर रेल में तो मेरे हिसाब से कहीं पाउडर कोटिंग नहीं लगता है सर। हम लोग नहीं नहीं, रेलवे में लगता है, सप्लाई देते हैं, लगता है, पेंट ही देते हैं। लगता है, लगता है भाई, रेलवे में लगता है? बिल्कुल लगता है। जो इनके सीट्स हैं, डोर्स हैं, उन पे लगता है। कोच, तो इन पूरे हाउस कोच जैसे में। उनका तो इन हाउस प्रोडक्शन है। नहीं, इनके कुछ पार्ट में वो लोग बाहर वेंडरों से कराते हैं। जैसे कुछ रेल के जो कोच के दरवाजे हैं, वो जेबीएम, जय भारत मोटर्स, जय भारती मारुति, जेबीएम वो करती है। इस तरह से करते हैं अलग अलग। तो टेंडर्स निकलते हैं उसके? हाँ, बिल्कुल निकलते हैं। ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो टेस्टिंग का। सर नमस्कार सर। सर एक डाउट था। अभी हाँ पाउडर भाई, कोटिंग में लाइक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं सर, लाइक कलर फेड हो जाना एक सर्टेन पीरियड के बाद, ऐसे जी, क्यों होता है सर? वो जब पिगमेंट्स या रेजिन गलत केमिस्ट्री यूज करी जाएगी, क्योंकि अगर ओके जहाँ पर आउटडोर चाहिए, वहां पर आपका ओके। प्योर पॉलिस्टर केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप वहां पर इपॉक्सी पॉलिस्टर या हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे, तो वो थोड़े दिन में ब्रिटल होके चिप ऑफ हो जाएगा या कलर भी फेड हो जाएगा। तो अगर आपको यूवी में और बेटर चाहिए, तो सुपर ड्यूरेबल पॉलिस्टर रेजिन लेना पड़ेगा। पिगमेंट्स भी हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट लेने पड़ेंगे, है ना। जैसे अगर सुदर्शन में आप यूज कर रहे हैं, तो सुदर्शन में सुडा पर्म की सीरीज है उनकी, वो हाई परफॉर्मेंस है सारे। सुडा एक्चुअली डर हम करके। लोग हम जी लोग कंसाई नेरोलैक का पाउडर यूज करते हैं सर, जी। पीपी का। जी, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट आ रहा है कि लाइक आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद कलर फेड हो रहा है, ऐसा कुछ कंप्लेंट आ रहा था सर। अब वही हम बता रहे हैं। देखिए, आप नेरोलैक का यूज कर लिए चाहे एशियन पेंट का यूज कर लिए,
अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने पाउडर सप्लायर से डिस्कस करके फिर उनसे उनके प्रोडक्ट मांगिए आप, क्योंकि जनरली कस्टमर क्या होता है, उसको कॉस्टिंग भी कम चाहिए और रिजल्ट चाहिए बढ़िया वाले, तो वो ओके सर, कैसे आएगा, बैलेंस में लेना पड़ेगा ना भाई। ओके सर, ओके सर। कस्टमर रिकमेंडेड है क्या पवन सर आपको? हाँ सर, हाँ सर, कस्टमर रिकमेंडेड है। ओके ओके, फिर आप कस्टमर को बोल सकते हैं नेरोलैक चेंज करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आप जो भी आपके सप्लायर हैं आप उनसे डिस्कस करिए, और ओके जो सर, प्रोडक्ट आपके सप्लायर पाउडर का रिकमेंड करते हैं आप केवल वही उनको दीजिए, तो आपको ओके, ये दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, ओके डेफिनेटली सर, अगर आप प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए तो थोड़ी कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी। ओके सर, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बताएं, हाइब्रिड ब्लैक माइट जो है वो 140 के आसपास नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कस्टमर बोलते नहीं हमें 110 में चाहिए, 120 में चाहिए। तो अगर आपको वो कस्टमर रिटेन करना है तो फिर आप उसी तरह का प्रोडक्ट बना के देंगे उसको, तो प्रॉपर्टी में तो कहीं ना कहीं फेल होगा ही होगा ना, हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। ये चीज। ओके सर, तो थैंक यू सर। इसके बाद आप SST सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, और फिर इसके लिए UV रेजिस्टेंस और लेड कंटेंट, ये सब चेक करके पाउडर कोटिंग का, फिर जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखिए। इसमें और भी बॉइलिंग वाटर आता है, लेकिन जो मेन पाउडर के टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेन है, ग्लॉस यहाँ तक, ये इम्पैक्ट तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप डेली नॉर्मल पाउडर बना रहे हैं उसमें ये चीजें जरूर चेक करिए। हेलो सर। सर एक्सट्रूडर में अपना टेम्परेचर रेंज कितना रहेगा हाइब्रिड के लिए और इसके लिए प्योर पॉलिएस्टर के लिए? एक्सट्रूडर में अगर आप, और आरपीएम भी बताइए सर उसका। नहीं आरपीएम देखिए मशीन मैन्युफैक्चरर का अपना स्पेसिफिक होता है, हम एक जनरल आइडिया दे सकते हैं, हर मैन्युफैक्चरर के अलग अलग आरपीएम रहेगा। देखिए 100 से हाइब्रिड के 150 लिए, केजी, 100 से 150 केजी वाले का मतलब बताइए जो अगर। फर्स्ट जोन है इसमें टेम्परेचर आप 30 डिग्री के आसपास रखेंगे, सेकंड जोन में 70 डिग्री, थर्ड सर जोन आपका में, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा एक मिनट, दूसरा शेयर कर, ये क्यों ऐसा हो, अब विजुअल है, यस यस। विजुअल है ना आप? ओके। यस। सो हाइब्रिड के लिए फर्स्ट जोन में 30 डिग्री, सेकंड जोन में 70, लास्ट जोन में डिस्चार्ज एंड पे 90 डिग्री, और यही जब पीपी आ जाएगा तो ये जोन तो 30 ही रहेगा, इसको आप 75 ले सकते हैं, इसको आप 105 डिग्री, और अगर आउटपुट मशीन का काफी ज्यादा है, सपोज 600 या 800 kg पर आवर है, तो वहां पर 4 जोन होते हैं। तो अगर 4 जोन की मशीन है तो आप इसको भी 100 ले सकते हैं, और इसको फिर 100 लीजिए आप, या 95, अगर 4 जोन की मशीन है। अगर थर्ड जोन की मशीन है तो ये 95 वाला आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और हाइब्रिड के लिए जो रेजिन परसेंटेज है रिकमेंडेड फॉर ग्लॉसी फिनिशेस हम बात कर रहे हैं, इसको आप मिनिमम 55% लीजिए हाइब्रिड के लिए। और पीपी के लिए आपको लेना पड़ेगा मिनिमम 60%, बिकॉज जो प्योर पॉलिस्टर का रेजिन है वो विस्कस होता है, ये आपको अच्छे रिजल्ट के लिए इतना लेना पड़ेगा। Yes, sir। तो सर इसका जो फाइनल जो एक्सट्रूडर में से मटेरियल निकलेगा उसका टेम्परेचर अराउंड 110 के आसपास ही रहेगा कि उससे नहीं थोड़ा नहीं, कम या? वो ज्यादा रहेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन सर हमारे लास्ट जोन से अगर 105 में है तो डिस्चार्ज में भी वो कहाँ से ज्यादा होगा, मतलब वो एक डाउट था। फ्रिक्शन फ्रिक्शन से जनरेट होता है इसमें, जब अंदर मिक्सिंग हो रही है तो उसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जो सेंसर लगे हुए हैं, जो टेम्परेचर आपने सेट किया है 105 डिग्री, तो वो मेटल जो एक्सट्रूडर की बैरल है वहां पे टच है, वो मटेरियल के अंदर नहीं आ रहा है ना, फ्रिक्शन से। यस यस। क्योंकि ओके। जो स्क्रू और बैरल के मेटल है उनके बीच गैप बहुत कम होता है, 0.2 से 0.5 mm। तो ये डिस्चार्ज एंड का तो जो सर पेस्ट, डिस्चार्ज इसको टेम्परेचर का आप रेंज कितना रखना पड़ेगा कि इसके लिमिट इसको आप से बाहर ना आ जाए, मतलब पेस्ट का? 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 125। दोनों कंडीशन में? यस, इसको आप मीन्स ये कर सकते हैं 120, 120 से 125, और किसी भी कंडीशन में ये 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 130 से ऊपर जाएगा देन जेल फॉर्मेशन होगा, यानी आपको पार्टिकल्स आने लगेंगे फिनिश प्रोडक्ट में। 130 आपको, इससे ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। और सेम इसी तरह जो ग्राइंडर है वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर टेम्परेचर। एक्चुअली सर अभी जो हम प्रोडक्ट में डील करते हैं ना वो मोस्टली फ्रेंच ब्लू ईपी हाइब्रिड है, पिकॉक ब्लू है और सिग्नल रेड है। तो सर इसके लिए अपने यहाँ पिगमेंट का कितना परसेंटेज होगा, मतलब एक्चुअली अभी तो हम ट्रेडिंग करते थे, तो अभी अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई करना बात है नहीं, इसका देखिए आपको तो अगर, इसमें। देखिए ऐसे बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर हाँ आपके ये- ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज हुए हैं तो पिगमेंट जी। डोज 4 to 10% तक रहेगा। डिपेंड है कलर क्या क्या चाहिए आपको। ओके सर। जी ओके सर, मैं बाद में कांटेक्ट करता हूँ आपको उस ठीक व्हाट्सएप है। पे। तो ये थैंक यू सर। ग्राइंडेड टेम्परेचर जो इनलेट एयर है, एक्सक्यूज मी सर, यस, वो जो सर गैप बता रहे थे, गैप बिटवीन स्क्रू एंड बैरल बैरल का 0.2। 0.2 से 0.5 mm रहता है, क्योंकि अगर इससे ऊपर होगा तो वो सेल्फ क्लीनिंग नहीं कर पाएगा, बैरल में एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज आपने एक कलर के ऊपर, व्हाइट के ऊपर मूंछल ग्रे चला दिया, ठीक है, हम्म। तो क्या होगा, दो लेयर आ जाएगा उसमें, एक लेयर व्हाइट का होगा, एक मूंछल ग्रे का होगा। फिर कभी भी बीच में कोई भी कहीं से पार्टिकल्स वो टूट के एक्सट्रूडर में मिल जाएगा और वो आपको कंटेमिनेशन या जेल पार्टिकल्स दिखाएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। सर जो तो इसका चीलर होता है, तो चीलर जैसे कन्वेयर बेल्ट जो होता है उसको भी लगेगा, और एसीएम में भी चीलर लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर आप इसको क्लीन प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्रॉस कंटेमिनेशन आएगा ना। बिल्कुल आप ये समझिए थिनर से वॉशिंग होना है, तो इसलिए जो लूज पाउडर उसको आप एयर से या वैक्यूम क्लीनर से सक करके हटा दीजिए, और उसके बाद में जो पीसेस हैं उनको, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो एक वॉशिंग जोन बनाइए अलग, जिसमें कि पानी से उनको वॉश करिए पहले। पानी में वॉश करने के बाद फिर उसको आप एमिके से करिए, तो एक तो एमिके कम यूज होगा और क्लीनिंग बेटर होगी। तो ये इनलेट एयर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और जो साइक्लोन से आउटपुट पाउडर आ रहा है, इसका टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 25 डिग्री से ज्यादा आएगा तो लम्प्स फॉर्मेशन आ जाएगा। लम्प्स फॉर्मेशन आ जाएगा। ये तो ग्राइंडिंग टेम्परेचर यानी एसीएम में जो प्रोसेस होगा उसमें की बात हो यस, रही है जी जी जी। ना? ओके। ये तो जो चिलिंग से हम एयर डालेंगे वो 10 डिग्री से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो जो अंदर टेम्परेचर, क्योंकि हीट फ्रिक्शन और ग्राइंडिंग में हीट जनरेट होगी, तो जो पाउडर साइक्लोन से निकल रहा है, जो सीव के ऊपर गिर रहा है, उस पाउडर का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 से आ रहा है तो यानी आपको यहाँ पर चिलर बढ़ाने की जरूरत है। आपका जो चिलर है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है।
10 टन का सीलर ठीक रहेगा सर? ऐसा तो रिकमेंड नहीं कर पाएंगे भाई। अलग अलग आप आउटपुट देखिए, अगर वो एफिशिएंट है। वो एक दो दो कन्वेयर बेल्ट और एसीएम के लिए 10 टन का सीलर हम्म। सफिशिएंट रहेगा? नहीं देखिए, आपके दो कन्वेयर बेल्ट की बात नहीं है, आउटपुट कितना है 10 टन के। आउटपुट भाई 150 kg। दोनों पर 150 है। हाँ जी। हाँ तो आप 10 टन तक ले सकते हैं, लेकिन पीक समर में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो कूलिंग इसलिए। कूलिंग कॉइल भी लगाएंगे सर उसके लिए, एसी? हाँ, कूलिंग कूलिंग कॉयल लगाएंगे आप, कंप्रेशर लगाएंगे, और ये रहता है ना कूलिंग टावर भी कूलिंग लगाएंगे। टावर भी है, राइट? जी जी जी। तो उसके बाद भी क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन देखते रहते हैं, लेकिन कूलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर मान लीजिए 10 टन में 2 या 3 कंप्रेशर उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उनकी एफिशिएंसी, कभी गैस लीक हो गई या कुछ हो गया, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। राइट राइट। इसमें सर जो एक्सपायरी बोलते हैं, जैसे 6 मंथ या 12 मंथ्स का एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी का क्या रहता है सर? एक्सपायर तो होता नहीं है पाउडर, बट पाउडर एक्सपायर होते हैं होता है सर? जरूर। बिल्कुल। देखिए, आपको मैट फिनिश में ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हम्म जो ग्लॉसी पाउडर है, अगर हम्म। वो पाउडर एक्सपायर हो गया है, तो जो स्मूथनेस पहले आ रही थी वो नहीं आएगा, हल्का सा टेक्सचरिंग इफेक्ट आ जाएगा उसमें, ओके और मैकेनिकल में भी पुअर हो जाएगा। हालांकि ओके। 6 महीने में तो नहीं होता है, हम्म। 1 से 1.5 साल में एक्सपायर होता है, बट सेफ कंडीशन में आजकल लोग 6 महीने लिख रहे हैं, सो दैट आप उसको 6 महीने में, विद इन 6 मंथ यूज हो जाना चाहिए पाउडर। ओके। और सर एक्सट्रूडर जो रहता है अपना, एक्सट्रूडर में मेंटेनेंस ज्यादा आने का सिर्फ स्क्रू का ही चांसेस है, या और दूसरा भी कुछ मेंटेनेंस आता है उसके अंदर? गियर बॉक्स में आएगा, देखिए। ओके। ये तो आप मेंटेनेंस से ज्यादा बेटर है अगर आप लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक कुछ चार्ट बना लीजिए, कि हम्म। सपोज 15 दिन में हमें ग्रीसिंग करना है, कहाँ कहाँ ग्रीसिंग करना, उसका पूरा चार्ट हो। उसमें ओके किसने ग्रीस किया किया कि नहीं किया, उसको मतलब काउंटर चेक के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। गेयर मतलब ग्रीस है, ऑयल है ना। तो ये राइट। चीजें 15 दिन में, 1 महीने में, एयर वो कंप्रेशर है ऊपर, उसमें मोबिल ऑयल पड़ना है, उसके लेवल, क्योंकि अगर पिस्टन रिंग उसकी कुछ गैप ज्यादा आ गया, तो वो मोबिल ऑयल यूज करने लगेगा, वो आपके एयर में आएगा तो आपके जो मिल में भी एयर यूज हो रही है, आप पैनल लगा रहे हैं उसमें भी एयर यूज हो रही है, अगर उसमें ऑयल आ गया, ऑयल कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट आएगा, तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो ओके। इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस से ज्यादा। और ईसीएम में सर, ईसीएम में क्या मेंटेनेंस होगा? एसीएम में जो क्लासीफायर है उसका वो घिस जाता है, मल्टीपल डिफ्लेक्टर जो रिंग एक लगा हुआ है वो घिस जाता है। लाइनर सर, लाइनर। हाँ, लाइनर घिस जाता है। फिर हम्म। अगर आपके ब्लॉक हैं या हैमर पिन है, वो पिन घिस जाती हैं, है ना। तो ये हैमर पिन अगर घिस रही है, तो कोशिश करिए आप कि पिन को 50% तक ही यूज करिए, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, दूसरे पिन लगाइए। अदरवाइज एक पिन अगर डैमेज हुई तो वो सारी पिन तोड़ देगी रनिंग कंडीशन में, ओके। और सर है जो ना। हम जैसे 10 किलो का पाउडर का बॉक्स है, तो 10 की हम उसको कैसे मेजर करेंगे? पाउडर जो बॉक्स के साथ 10 किलो होना चाहिए, या उसमें जो पाउडर है वो 10 किलो होनी चाहिए? आपके आपके क्वेश्चन में ही आंसर है भाई, आप क्या दे पाउडर रहे हो। पाउडर ही 10 kg होना चाहिए, बॉक्स से अलग। बॉक्स ऑब्वियस है। मतलब वो 11 किलो का हो जाएगा मतलब? नहीं नहीं, हाँ, 11 किलो नहीं, आपका नेट वेट। आपका नेट वेट बॉक्स 200-250 ग्राम का जो भी होगा, हाँ हाँ। तो उसको मिला के जैसे 10 kg 250 ग्राम हो गया, तो 10 kg आपका आपका नेट पाउडर हो गया। ओके। नेट वेट हाँ। 10 किलो लेना एंड है। ग्रॉस नेट वेट। वेट, ग्रॉस वेट आप जो भी हम्म। ले सकते हो, आपका वेट बॉक्स का है प्लस पॉलीथीन है उसमें, है ना। तो हम्म। ग्रॉस वेट कुछ भी हो सकता है, नेट वेट 10 किलो होना चाहिए। लेकिन जब 10 किलो का बॉक्स आपकी पैकिंग है, अगर आप क्लियर बना रहे हैं या रेजिन कंटेंट जिसमें ज्यादा है, वहां पे 10 किलो पैक नहीं हो पाएगा।
वहां पे आपको 8 किलो पैकिंग करना पड़ेगा। ओके ऐसा क्यों? कोई आंसर दे सकता है ऐसा क्यों? सर वो जो उसमें फिलर वगैरह यूज कम होते हैं और रेजिन की जो डेंसिटी कम होगी इसमें। तो स्पेसिफिक रेटिंग बहुत कम हो जाती है। कम हो जाती है, उसी वजह से वो नॉर्मल ज्यादा। जी, जैसे नॉर्मल हमारी जो स्पेसिफिक रेटिंग 1.6 है, तो इसी को अगर हाँ हम हाँ क्लियर बनाएंगे पाउडर, तो केवल रेजिन रेजिन होगा या एडिटिव, तो 1.2 के एडिटिव। आसपास। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे सर मेजर करेंगे? ये एक अलग मेथड है, देखिए हम देखते हैं अगर है हमारे पास। सर ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी। एब्रेशन दिख रहा है ना ये? हाँ हाँ हाँ। तो नितिन सर आप पाउडर बना रहे हैं अभी? हाँ सर। कहाँ पे सर आपका? मैं वडोदरा में हूँ अभी। अच्छा डीवाईजी कोटिंग वहाँ पे ही है ना? हाँ डिवाइस कोटिंग वडोदरा में ही है। राइट। मेरे दोस्त थे वो, यश चांडे। अच्छा अच्छा। ये मेथड है, देखिए इसका सिक्योरिटी का। ये रिलेटिव डेंसिटी बॉटल 25 ml की होती है, उससे निकालते हैं। तो इसमें जैसे पहले बॉटल का वेट निकालेंगे, फिर उसमें पाउडर डाल के उसका वेट निकाल लेंगे। देन सॉल्वेंट, इसमें एमईके नहीं यूज होगा, इसमें केरोसिन यूज होता है, या एमटीओ एमटीओ बेस्ड ट्रायल होता है। एमटीओ ओके। कर सकते हैं ना। तो इस तरह से ये देखिए, ये फॉर्मूला लगेगा, और ये नीचे इसमें दिया हुआ है जो क्या क्या चीज निकालनी है, ये देखिए यहाँ पे दी हुई है। इस तरह से पुट करके आप निकाल सकते हैं, या आप कभी पर्सनल में करिएगा तो हम आपको इसका कोई वीडियो होगा तो दिखा देंगे। Okay. Sir, can we conclude and will and in ओके, future we will schedule only question answer हाँ session. So दैट विल बी बेटर। yeah, I think the question is a more. Uh, so what we can do, we have the all the participant email ID, and in month of March, either as per the sir's availability, we will only schedule uh, the technical session where the question answer session will be there. दैट विल बी But बेटर। the condition is that all the participants must be share minimum five or three questions, whatever the technical glitch they are facing, they are manufacturing other applications. So they need to submit three questions minimum. Then we can do this activity. So in that way, we will try to answer your whatever the problem you are facing during your manufacturing, either machineries, either your applications, either packaging, each and every issues we will try to solve that. I think this is okay. Yeah, those who are present. Yes, sir. Okay. I have one request, Yeah. if you consider. So Yes. for next session, it will be better if we have a comparative study on the technology which we are using in-house, means in India, and what technology being used as globally level, so that we can adopt some new technology which can increase our productivity and quality. ओके, Okay. So what we can do? Just I mean to say one comparative study we would expect in next session. Okay. हाँ श्योर। So we एक्चुअली will also आई email. हैव अ Yes, sir. स्लाइड स्लो that we can use in the next time, the advances development in powder coating. Right, sir. That is not, some technology is available in India, and what the technology is out uh, abroad, like low bake Yes. powder, MDF powder, है ना? So because in India that most of the development are only shade matching, no technology transfer is there.
So definitely next time we can consider that. Yes, Thank you so much, sir. definitely in future, and we will also email you the feedback, and then where you can also mention what you want to learn, because our objective to share the knowledge with and solve your problem. So now the session we are going to end here. Before we are going to end, so I'm going to special thanks to Kuldeep Verma sir, so accepting our request and delivering a very intellectual and knowledgeable sharing session. I think it is a three into half, means 3.5 घंटे से ज़्यादा हो गया. So, but still, participants are active and asking the lots of questions. So, thank you, Kuldeep sir, for Top accepting sir, our Kuldeep request. sir, hats off. And Thank you. another thing is that without the participant, this session is not possible. Exactly. So I'm also saying thank you to all the participants across the pan India, either outside the India, those who have joined this technical session. And then in future, definitely we will try to Garware Institute of Career Education, Department of Pen Technology, definitely going to organize only fully 100% question answer session type of technical sessions where we will try to solve your query, whatever with that. So with this word, once again, I'm going to say thank you to all the participants and speakers. Very soon we will organize another session like powder coating and many others things. We will connect with you. Okay, thank you very Thank you, much, sir. sir. Thank Thank you you, so Thank Alif much, sir. sir. Thank you, sir. Thank you so you. much. It Thank you was all. very nicely organized. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.